कंटेम्प्ट इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास है कंटेम्प्ट में है। मैं उसे प्रोविंशियल देख तो लीजिए ना, आफ्ताब अकबर दुरानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कंटेम्प्टर नंबर 1, उमर हामिद खान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्टर नंबर 2, नदीम अहमद चौधरी चीफ सेक्रेटरी KPK कंटेम्प्टर नंबर 3, जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब, मोहम्मद फखरे आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध, शकील खादिर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब, डॉक्टर खालिक शाह IG बलूचिस्तान, अख्तर हयात IG police KPK, रिफत मुख्तार IG police Sindh. Just my consumption, because the contempt proceeding is before us. The contemptor, the person who has violated the order of this court. So we have to first see who has violated the order of this court. सर, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है, आपने उस पे और this is their responsibility to conduct the fair and transparent elections. Exactly. And all authorities हैं वो पैरा 4 में है। मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस, what do you want from us? सर, अगर आप चाहते हैं मैं आपको CD प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में। अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें। This is a constitutional court. मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. Yes. Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes. And Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done, or the Election Commission has done, they passed on your Lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their nomination papers before the returning officers, and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. And where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here, and I is there. मैंने CM में जो 1 मूव की है, मैंने उसमें सारों के नाम दिए हैं जिनको ने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and chief secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the chief secretary come into the picture? Either you file a different petition. This is a contempt matter. You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so.
My lord, your lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that the... Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा. आपको फिर मैं अपना अगर मफहूम न समझ. मगर आगे इलेक्शन प्रोग्राम किस पेज पे आपने लगाया है वो दिखाएं. Without disturbing the timelines and election कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में लगाया है सर. वो तो अलग है ना, वो तो आपकी 47 के अंदर. हाँ 47 कितना है भाई. अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया उसकी अपील फाइल कर दें. पेज 25 बात है. जी सर. अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है उसकी अपील फाइल कर दें. जरा ये भी सुन लीजिएगा. सैकड़ों पिटीशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं. नकल के लिए सैकड़ों पिटीशंस की नकल नहीं दे रहे हैं. वो जो रिजेक्ट किए हैं नॉमिनेशन पेपर. आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं सर? एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी एक्सेप्ट. ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो रिजेक्ट के नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना. कितने पूरे पाकिस्तान में एनए और प्रोविंशियल मिला के? तो ये जो है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है. 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए. फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट. ये मैंने जो CM1 ऑफ 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप आपकी जो ये नहीं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप बेशक आर्गुमेंट कीजिए. ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए. जी रिजेक्ट हुए. अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, वो सोर्स जो है लास्ट पेज पे लिखी हुई है. आपका पेज जो है पेज 20 पे देखिए सर. द डेटा हैज बीन गैदर्ड थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है, और सारा जो डेटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ये आपको ये पता है कि 668 कंफर्म है आप? जी सर कंफर्म. तो ये अखबारों में भी आया, नहीं है मेरे पास भी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो आपने इसमें डाल दिया. ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के नाम भी इसमें नहीं है. ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है. और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है सर, ये जरा बात तो सुन लीजिए ना. जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म. अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रिटर्न करना पड़ रही है. सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली. पेज 9. अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM1 के अंदर है. जी सर. अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है. मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली. अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? बंदे का नाम ही नहीं. से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादिक है, ये बता रहे हैं. भाई तो नाम होना चाहिए ना. मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई ओमिशन है. आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं. So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. Take. I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected. En masse of one political party.
Shall we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, Sir, then please. fine. I'm asking a simple legal question. Please. Let me complete the question Yes. so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted. Someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी don't be so helpless that they're not giving us order. There is nothing on record if you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to. We don't know what the nature of the objection is. Someone can be a lone defaulter, someone can be maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this? Either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. IG has got nothing to do with the election. It's the Election Commission of Pakistan. I don't think we need to teach that in the Supreme Court article. इसमें पढ़ने आइन में, where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? If you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the Higher Court is so helpless, they cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper? यहाँ करके ये CD हो गई और ये हो गया वगैरह हो गया. Let us get. We are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. But you are standing behind every political party for election. We have repeatedly said so. And you are bringing here IG police को, चले हम उसको नोटिस कर देते हैं. IG आज कर देंगे नोटिस, कंटेम्प्ट, उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेम करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा. क्या करें? ऑर्डर हमें बता दें, ये ऑर्डर कर दें, आज हम कर देते हैं आपके लिए ऑर्डर. हाँ, खुले हुए दरवाजे, अभी भी टाइम है. Why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. कोई वो अलाउ करेंगे, शायद कोई डिसमिस करें, I don't know. फिर आप शायद हमारे पास आ जाएं, फिर हम उसको देख लेंगे. राइट ऑफ हियरिंग दी है इनको, नहीं दी है इलेक्शन कमीशन ने. आप अगर सुनना पसंद करेंगे, मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए. जब सर ये बातें ना करें ना, तो मुझे जरा सुन लीजिएगा. अभी क्या कर रहे हैं हम आपको? आप हमारे सवाल के जवाब भी तो यही पूछ रहे हैं. आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. नहीं, एक मिनट. राइट ऑफ हियरिंग जो उस दिन 3 बजे था, वो आप बताए ना, इलेक्शन कमीशन वालों ने सुना है इनको. ACP को बुला लेना जरा, एक मिनट, पता तो चले ना कि जरा पेज 12 पर रुक जाइए सर. कंप्लायंस के तक सर ये आए थे 3 बजे आपके पास, और हमने रिपोर्ट भी कंप्लायंस सबमिट की. नहीं आए थे, हियरिंग हुई थी. बिल्कुल सर, वी हैव सबमिटेड. आए थे, मीटिंग हुई, इंस्ट्रक्शंस हुई, डायरेक्शंस हुई टू ऑल द रिलेवेंट क्वार्टर्स, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड सर. इनके जो रिजेक्शन के अलावा इनके एक्सेप्टेंस का आपको पता है कितने हुए हैं? सर ये अभी डेटा है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं, टोटल का है सर. लेकिन ये अभी तो दैट विल बी डिसाइडेड बिकॉज द पार्टी पोजीशन विल बिकम क्लियर आफ्टर ऑन 13th of January.
when Form 32 is drawn. इन्होंने 13 जनवरी को क्या होगा? Sample allotment होगी तो it will ये रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की अपील का तारीख कब तक है? आज आखिरी जी आज आखिरी 10 तारीख तक. आज आखिरी है कि दायरगी की, और तो 10 तक फैसले करने हैं, 10 तक फैसले करने हैं. आज आखिरी है दायरगी की. तो सुन तो लें जी. 3 तारीख today was the last date for filing nomination papers, appeals, and 10th of January is the last date for deciding the appeal. तो अभी वक्त है. आज So why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. कुछ अपीलें फाइल Why कर दी you आपने? losing your right of appeal? रिजेक्शन ऑर्डर के लिए सारी रिटों हाई कोर्ट्स में जरा देख लीजिएगा तो फ्लड ऑफ रिट्स पिटीशन फाइल हुई. सर एक चीज मैं अर्ज करूं, जरा पेज 12 पढ़ लीजिएगा. आपका ऑर्डर था कि स्मूथ और फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंसी में. हम क्या चाह रहे हैं? हम भी तो चाह रहे हैं ना यही हो. हम कब कह रहे हैं कि ना हो स्मूथ? जब आपको एक फोरम मौजूद है, व्हाई यू नॉट अवेलिंग ऑफ द फोरम? वो मैं करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूं. जैसे आपने अभी फरमाया कि बगैर पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा है ना. ये जरा पेज 12 पे पढ़िए जरा. मेरी ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह, ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक डायरेक्शन है टू द आईजी एंड चीफ सेक्रेटरी. ये जरा पढ़ लें पेज 12 पर. और माय क्रिमिनल ओरिजिनल ये लिख रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को लिख रहे हैं, ये जो है इलेक्शन कमीशन वाले. With great concern, I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates particularly belonging. इस खत का इस केस से क्या ताल्लुक है? इसी से ताल्लुक है, इसी से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इन्होंने जो बकौल इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं उसका ये असर हो रहा है. जरा पढ़ लीजिए. जरा सवाल तो खत्म होने देना. आपका हमने जो ऑर्डर पास किया 22 दिसंबर का ऑर्डर था, ठीक है? ये 22 दिसंबर का ऑर्डर था टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये कोई खत आप पेश कर रहे हैं प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का खत जो 24 दिसंबर का खत है, तो यकीनन इस ऑर्डर से इसका ताल्लुक है ही नहीं. है, बिल्कुल है. इन्होंने आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट पर इन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को और डिफरेंट चीजों को. आपकी कंप्लेंट किधर है इलेक्शन कमीशन के सामने? नजर नहीं. आपकी कंप्लेंट कहाँ है? वो रजिस्ट्रार ऑफिस में इधर दो. कॉपी नहीं है हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट की. आपने कहाँ फाइल की है? चीफ सेक्रेटरी वगैरह को भी भेजा. ये किधर, ये आपकी कंप्लेंट किधर है टू ईसीपी? कंप्लायंस रिपोर्ट दिखाऊंगा. हाँ, हमारे पास नहीं आई है ना, अभी दे रहे हैं. देखते हैं क्या कंप्लायंस की ऑर्डर दी. वो मैंने जो है पेज जनाब को बताया था उस पर है, वही हमने भेजी थी. पेज 23 रेयर है और वो शुरू होती है मेन पिटिशन में. हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 47 में ये शुरू होती है हमारी कंप्लेंट. पेज 13 से शुरू होती है, पेज 13 से लेके पेज 23 तक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 47 में. और अब अगर इनके अपने चीफ इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी. I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? ये उसकी पेज 13 से लेकर पेज 23 तक है. In the CP Constitution Bill 47, 13 से 23. May I read the whole or may I read the last? I don't know which file number. Tell me the file This number. is Constitution Bill 47, 23. 13 से शुरू होती है तहरीक इंसाफ बनाम वर्सेस द फेडरेशन एंड देन द इलेक्शन कमीशन. जी ये पेज 13 पे. ये तो इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसको आपके पास कॉपी मिली है? ये तो उन्होंने कंप्लायंस की है ना, ये जो ऑर्डर की जो कंप्लायंस है
یہ تو پہلے کی بات ہے نا, اس کے بعد کا آرڈر کے بتائیں بات. یہ آرڈر تو ان کے پاس ہوگا, آرڈر انہوں نے مجھے کوئی نہیں دیا الیکشن کمیشن. اب آپ ہم تو تھک گئے سوال پوچھ کے, اب دوبارہ سن لیجئے سوال. اس آرڈر کے بعد آپ کی کمپلینٹ کہاں ہے؟ کمپلینٹ تو یہاں نہیں لگی ہوئی, میں نے نہیں لگائی, لیکن آرڈرز لگائے ہیں جو الیکشن کمیشن نے بھیج دی. کمال ہے, اگر آپ جس آرڈر کی کمپلائنس الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے وہ آپ نے کمپلینٹ ہی نہیں فائل کی. کمپلینٹ نہیں لگی ہوئی ہے, لیکن جو انسٹرکشنز دی ہیں پیج 14 سے سی پی میں. I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. میں کرتا ہوں سر, ان کا جواب بھی مجھے الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر آپ کا کمپلائنس رپورٹ میں کھوسا صاحب پیج یہ دسمبر 26 کا لیٹر ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے, ان کو دکھائیں کھوسا صاحب کو. اس میں پیراگراف 4 کے اندر لکھا ہے that after the meeting the delegation of PTI the commission taking immediately notice has issued instructions. یہ موٹی والی کتاب میں پیج, اس کا پیج نہیں ہے, تیسرے نمبر پہ یہ پیج نمبر نہیں ڈالے. Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, اور پیج میں نے اگر یہ کہا ہے انہوں نے تو کنٹمپٹ بھی تو آپ نے انہی کے خلاف لگائی ہے, کہا انہوں نے, اور میں نے اپنی جو پٹیشن کرمنل اوریجنل لگائی ہے اس کے پیج 14 سے آنورڈز میں نے لگائی ہیں. ان کی انسٹرکشن جو انہوں نے نیچے بھیجی پروونسز میں بھیجی. ٹھیک ہے سر. اب یہ پروونشل اسی لیے میں پیج 12 پہ پڑھ رہا تھا. یہ 132 سے شروع ہو رہا ہے اسی پیپر بک میں جو انہوں نے ابھی دی ہے نا کورٹ میں, اس میں سارے انسٹرکشنز ایشوڈ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں یہی عرض کر رہا تھا اٹ واز ناٹ جسٹ مینٹ ٹو ایز اے ریچول کہ آپ بھیج دیں, اس پہ آپ نے قانون کے مطابق 184, 185, 186 اگر کوئی obstruct کرتا ہے, انسپیکٹر جنرل پولیس یا چیف سیکرٹری ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیتے ہیں, پولیس باہر کارڈن آف کر کے ریٹرننگ آفیسر کے آفیسر کو بلاک کر دیتی ہے, کینڈیڈیٹس کو اندر نہیں جایا جانا. شکایتیں تو چیف الیکشن کمیشن کو ہوں گی نا. پڑھیں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ پروونشل الیکشن کمشنر کیا لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ فلڈ آف کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں, آپ اس کا کیا تدارک کریں. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خاموش تماشائی کی طرح صرف اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے مبرہ ہو گیا کہ ایک لیٹر لکھ کر کہ جی اس طرح یہ کریں. اب یہ دیکھیں پیج 12 پہ ذرا کائنڈلی ریڈ, بے ود می, اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا, آپ کو پیٹرن پتا چل جائے گا پاکستان سارے میں کیا ہوا ہے. ود گریٹ کنسرن, اب یہ لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے, ود گریٹ کنسرن آئی ہیو دی آنر ٹو اسٹیٹ ٹو برنگ. آپ I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, میں نے نہیں دیکھی اس کو, یا مجھے کاپی نہیں ملی ہے, تو اب آپ دیکھیں نا, یہ تو کوئی اس کو کل رکھ لیں بشک. آپ پلیز ٹھہریں, مجھے نہیں ملی ہے یہ. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. اب آپ کو مل گئی, اب آپ پڑھ لیجئے. اب یہ ہم روزانہ دیکھیے, روزانہ آپ کا ایک کیس تو نہیں ہم چلائیں گے کہ پورے سپریم کورٹ میں ہم پھر ایسا کریں کہ دس سپریم کورٹ شوڈ نو ڈو نو ادر ورک بٹ دس. یہ 200 صفحے میں یہاں کھڑا ہو کر تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. نہیں کریں ضائع, اب اتنا کیا اور کر لیں, کوئی فرق نہیں, ہم رات تک بیٹھ سکتے ہیں آپ کے لیے, مگر روزانہ نہیں بیٹھیں گے. اب ایک یہ صفحہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں, اب یہ تو ذرا پلیز پڑھ لیجیے گا. کون سا صفحہ بھائی, آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا.
آپ آرڈر کی کنٹمپٹ میں آئے ہیں. کیا آرڈر سے پہلے باتیں اور irrelevant باتیں نہیں. اب آپ دیکھیں, ہم ان سے سوال پوچھیں گے آپ نے آرڈر پہ عمل کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں, مگر اتنی بڑی انہوں نے کمپلائنس رپورٹ فائل کر دی ہے, لکھ کر کے انہوں نے سارے انسٹرکشنز اپنے DROs ROs سب کو ایشو کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی خامی دکھائیں تو بات سمجھ آتی ہے. ذرا یہ اکھاڑا نہیں ہے کہ کس کی آواز بھاری ہے. آپ بات کر لیں, ہم خوش چپ چاپ سنیں گے, پھر ہم ذرا جملے کمپلیٹ کر لیں. آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ ہمیں بولنے دیں نا. چلیں بولیں. پہلا پوائنٹ یہ آپ نوٹ کر لیجئے, اس کا جواب دے دیجئے, پھر ہم دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں گے. پہلا پوائنٹ اب آپ کو ہم نے سمجھا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تو کنٹمپٹ کس کے خلاف مانگ رہے ہیں, آپ IG اور چیف سیکرٹری کے خلاف مانگ رہے ہیں. ان کا کیا لینا دینا ہے الیکشن سے؟ ان دو باتوں کا جواب دے دیجئے بس. عرض کروں, یہ جو آپ نے آرڈر کیا تھا ٹھیک ہے, اس پر انہوں نے بالکل سنا ہمیں. سننے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ پروونشل الیکشن کمشنرز کو اور باقی کو لیٹرز لکھے. اب پروونشل الیکشن کمشنر اس کے جواب میں کیا لکھ رہا ہے یہ ذرا پڑھنے کی تو مہربانی کر لیجئے گا. آپ کی تو بات میں نے اتنی سنی, یہ بھی ذرا پڑھ لیجئے پلیز. With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. ذرا آپ ڈیٹ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی. 24 دسمبر ہے. کمپلائنس رپورٹ کی ڈیٹ پڑھیے. 24 یہ وہی تو انہوں نے اسی دن. نہیں آپ پڑھیے نا پلیز ڈیٹ. یہ آپ پڑھیں گے نہیں اگر آپ ڈیٹ پڑھ لیں. اس کی 26 دسمبر. تو بھائی اس آپ کے جو تحفظات تھے اس پہ انہوں نے حکم جاری کر دیے ہیں 26 کو, تو اس سے پہلے والی بات پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا نا. اس کے بعد کی بھی میں نے 26 کے بعد کی کوئی بات بتائیں. 22 کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, 26 پہ انہوں نے کمپلائنس کر دی اس کی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کچھ انہوں نے غلط چیزیں کی ہیں تو بتا دیجئے. میں آپ کو سی ڈی بھی چلا کے ذرا دیکھ لیجئے گا, اور جو کچھ آپ نے بھی میڈیا پہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جس طرح. میں تو میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. چلیں اچھا کرتے ہیں آپ, سکننگ ادروائز. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو بلاک کیا ہوا تھا. وہاں ہیوی کنٹینجنٹ آف پولیس کھڑی ہوئی تھی. وہ پوچھتے تھے آپ کس کے ہو, تو جب PTI کا پتہ چلتا تھا تو وہ کینڈیڈیٹ کو بھی اٹھا لیتے تھے, پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اٹھا لیتے تھے, ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو بھی اٹھا لیتے تھے. یہاں بھی یہی جو کمپلینٹس کی ہیں اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی, ان کے 26 کے بعد بھی یہی ہوا. یہ باتیں تو آپ نے لکھی بھی نہیں ہیں. لکھی ہے. کہاں لکھی ہے؟ یہ جو میں نے CMA دی ہے ہی نہیں, لکھی نہیں کہیں آپ نے. سر سب آپ ایسی باتیں تو نہ کریں جو آپ لکھ بھی نہیں رہے ہیں. نہیں, کرمنل اوریجنل میں دیکھیے ذرا, لکھا یہی ہے. اور کیا کس چیز کی کرمنل اوریجنل کر رہا ہوں یہ ذرا ملاحظہ کیجیے میری گراؤنڈ. انہوں نے یہیں سے کیا, یہ دیکھیں. That despite یہ پیج کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ پیج 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. یہاں grounds میں نے لکھا پیج 3 کے last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. تو انگریزی ہے, یہ انہوں نے کمپلائنس کر دی ہے. یہ دیکھیے, یہ انہوں نے فائل کر دیا اتنا بڑا ڈاکیومنٹ. سر یہ ریچول نہیں تھا کہ صرف آپ نے ایک کاسمیٹک جو ہے کمپلائنس کرنی ہے. آپ کی جورسڈکشن, آپ یہاں ایز اے گارڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی پیپل آف پاکستان, آپ نے انشور کرنا ہے دیٹ دی الیکشنز آر فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ, جو آپ نے ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور آپ نے کیا کیا جی؟ سر میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں, ہم نے ابھی ایک اور سپلیمنٹری رپورٹ بھی داخل کر رہے ہیں. اسے سو مچ سو ان کی ایک سمری ہم داخل کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی ان کی گریوینس آئے ہیں کہ یار ان کی نامینیشن پیپرز لے لے, یا ان کی گریوینس, دیر از اے سمری and there is a complete record. We have taken every steps to ensure that their nomination papers are accepted, and the RO has confirmed. The summary says so. کھول کے دیکھیں کیا چیز ہے. یہ سمری لگی ہے سر. نہیں تو آپ کو نمبر نہیں پتا آپ کو کتنے ایکسیپٹ ہوئے اور کتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ سر وہ ابھی
once the RO finalizes these یہ پارٹی وائز نہیں ہے سر, there is a general statement, کیونکہ پارٹی وائز تب پتہ چلتا ہے when there is a party ticket and party symbols. صرف یہاں جمع کرا کے رپورٹ دی ہے. نہیں, اس پہ کمپلائنس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ انشور کریں گے کہ سارے فارم جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوں؟ سر we did ensure, یہ اگر سمری ہے تو یہ تھوڑا صبر کریں. کمپلائنس وہی ہے جو ہم نے لیٹر لگائے ہیں. کمپلائنس رپورٹ وہی ہے جو ہم نے لیٹرز لگائے ہیں. نو سر, میں آئی ریڈ اٹ سر. یہ سمری جو اوپر لگی اور اندر اس کے نیکسچرز ہیں, اس میں ایک ان کا کمپلینٹ آیا تھا کہ RO NA90 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary ریٹرننگ آفیسر تک پہنچنے دیں گے تو تب ہے نا. ریٹرننگ آفیسر سے آپ رپورٹیں مانگ رہے ہیں. کھڑا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کھڑا ہو جائے ان کو. کیوں نہیں الیکشن we did issue direction to each and every corner. آپ آئی جی کو ریموو کر سکتے ہیں اگر پولیس کو ہائی ہینڈڈنس کرتا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن کے تابع ہے اس وقت ساری چیزیں, مشینری جو ہے. they have to stand with you. They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to the Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even article 187 is enjoined. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake. If the elections are not held freely and fairly. یہ جو سمری ہے تو 31 لوگوں کے لیے نا, 31 فارم. سر جتنی بھی آئی تھی سر ان کو ہمارے پاس یہ آئے تھے ان کو ڈسپوز آف کیا سر. جتنی بھی ساتھ ساتھ آتے رہے the commission took steps and forwarded it accordingly. ایک آدمی راجن پور رجحان اور بکر اور سکھر سے تو نہیں آ سکتا یہاں الیکشن کمیشن کے پاس. وہ تو وہیں کرے گا مقامی طور پر. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر, پروونشل الیکشن کمشنر. میں وہی لیٹر آپ کو پروونشل الیکشن کو, اور انہوں نے جو اپنی کمپلائنس رپورٹ میں لکھا ہے انہوں نے وہی لکھا ہے کہ وہ لیٹر. آپ کی پوری کنٹیمپٹ اپلیکیشن پڑھ لی ہے, اس میں آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک ایلیگیشن بھی نہیں لگایا ہے. آپ نے بس جنرل باتیں کی ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن, وی کمپلیٹلی اگری ود دس, وی 100% انڈورس اٹ. یو ہیو ناٹ میڈ اینی ایلیگیشن. I mean, what are we doing here? Sending people for contempt? You have just made, yes. This court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The election commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general باتیں کر رہے ہیں, تو کوئی specific بات ہو تو ہم اس کو دیکھ سکیں. تو where is anything specific? So what you, we can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, that we should hold the elections ourselves, وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لی ہے کہ جو پھر کیا ہوا تھا اس الیکشن میں, جو آپ نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے, اینڈ پھر ہم سپریم کورٹ نے کتنا وقت ضائع کیا, اور پھر وہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی سبسٹینشیٹڈ ایلیگیشن نہیں تھے. 35 پنچر والی جو بات اسی کورٹ میں ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے بہت ساری بے ضابطیوں کا انفرل کیا تھا, اگرچہ اور ہر چیز مسترد ہوئی, آرگنائزڈ انہوں نے ہر چیز مسترد ہوئی, آرگنائزڈ ہر چیز مسترد ہوئی. ٹھیک ہے, آرگنائزڈ انہوں نے کہا نہیں ہے, لیکن irregularities انہوں نے 47 اسپیل آؤٹ کی تھی, اس میں بھی یہی ہوا تھا آپ کی اسی کو. بھائی ہم تو ججز نہیں تھے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ جو بھی ججز تھے اس وقت انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا, آپ نے کورٹ کا بے تحاشا وقت ضائع کیا, آپ نے
اور کورٹ نے آپ کے سارے ایلیگیشن مسترد کر دیے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا اور اس کا, کوئی کمپیریزن نہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان میں آپ دیکھ لیں ذرا, یہ خود چیف اپنا الیکشن کمشنر نے اسپیل آؤٹ کیا ہے 12 پہ جو میں نے عرض کیا. الیکشن کمشنر ہم نے تو نہیں اپوائنٹ کیا ہے, نہ آپ ہی نے اپوائنٹ کیا ہے. میں نے نہیں کیا. تو آپ جو باتیں اب دیکھیں, کوئی پاکستان کو ذمہ داری نہیں لیتا ہے. بس کیوں نہیں پرو ایکٹیو الیکشن ہونے نہیں دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن اور ان کو اتھارٹیز کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ ڈائریکشن ہم کیا دے سکیں گے؟ 22 دسمبر کا آرڈر سے سخت آرڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ اگر انہوں نے ہمیں ٹال مٹول کی ہوتی, we would have taken them to task. تو نہیں کیا نا عمل. اب آپ سنتے نہیں نا, ہم آپ کو سنتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں خاموشی سے. وہ بات کر رہے تھے, آپ ان کو بھی بار بار میں تو آپ کو ہی سنے جا رہا ہوں, کب میں بول رہا ہوں. آپ ہی بس بول لیں, پھر آپ بول لیں, پھر ہم چپ چاپ بیٹھتے ہیں پرانے اسٹائل میں. وہ 12 وہ پیج پڑھ لیں. Whenever you finish, you tell us. 12 پیج پڑھ لیں. 12 پیج آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے سمجھ لیا. 24th of December. This report is dated 26th of انہوں نے جو December. کمپلائنس رپورٹ میں ریفر کیا نا, اس میں انہی کا ریفر کیا ہے. کنٹمپٹ پٹیشن میں آپ کی 2 پیج کی پریئر ہے, آپ پریئر پڑھیں, وہ کنٹمپٹ میں آتی ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں کی اجازت دیں, ریلیز کی اجازت دیں, یعنی کنٹمپٹ تو صرف اس چیز کی کنٹمپٹ ہے کہ آرڈر کی نان کمپلائنس. اس حد تک کورٹ دیکھ سکتا ہے کہ جی ہمارے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے, تو الیکشن کمیشن از ریسپانسبل ٹو فیس دی کنٹمپٹ پروسیڈنگز. اگر آپ اپنی پریئر کلاس پڑھیں نا پیج 6 سے 7 پہ, تو آپ تو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ریسپونڈنٹ نمبر 2 may kindly be directed to take against the culprits under section 55, 184, 186, 187 and 188 of the election act. جنہوں نے میرے پروپوزلز کو اٹھایا ہے, جنہوں نے میرے سیکنڈرز کو اٹھایا ہے, صرف اس آرڈر کی ہو رہی ہے نا. ہاں, آپ اس کو نئی پٹیشن کے طور پہ آرگیو کر رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. This is not a fresh petition, this is only the proceedings of contempt which can be initiated against the alleged contemptor if you will make out the case of contempt. سر پیرافری آف ٹائم ہے شارٹن. مائی لارڈ, آپ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ وی ول ناٹ کاؤنٹیننس اینی ڈیلے ان دی الیکشن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریوی ٹو دیٹ ایٹ آل. آپ نے میرے وکیل کو بھی کنٹمپٹ نوٹس دیا, سو آئی کانٹ ٹیک دیٹ رسک آف گوئنگ ٹو دی ہائی کورٹ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو in any manner whatsoever, I don't want the deferment of the election even for a moment. پریئر کلاس تو آپ کی مین جو پٹیشن جو یہاں لگی ہوگی اس سے بیانڈ دی اسکوپ آف دیٹ. سر الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف 2 پیج کی سر آرٹیکل سیکشن 184, 185, 186, 187 جو بھی پکڑتا ہے, obstruct کرتا ہے اس لیول پلینگ فیلڈ کو, جو بھی ڈینائی کرتا ہے, اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے الیکشن کمیشن. Why is the election commission sleeping over it and privy to But all you've this? not filed a single complaint. سر میں نے We are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us this was my complaint. This was left unattended. ذرا سی ڈی دیکھ لیں پھر جو کچھ ہو رہا ہے. Afid Khosa Sahab, I think you should speak, and I don't know. You don't let us talk at all. Yeah, it's the other way around. میں تو سر as an officer of this court, میری تو یہ ٹریڈ میں ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو obstruct کروں. یہ کنٹمپٹ میں کمپلائنس ہونی ہے نا, کمپلائنس. اب آپ ان کو اگر شکایت کریں گے کوئی, جو کہ بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, بیکاز ہمارا تو یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہے, اس کے اندر ہم بلا کے کسی کو کہیں کہ تم کنٹمپٹ پروسیڈنگ فیس کرو, چارج فیس کریں. لیول پلینگ فیلڈ دے دیں. لیول پلینگ فیلڈ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے ان کو, بتائیے. بالکل دے رہے ہیں سر, ایک منٹ, ایک دے رہے ہیں سر. سر 550 پوچھ لینا ان سے, 1 منٹ بولنے دیجیے نا ان کو. سر میں سوال کیا ہے, جواب تو دینے دیجیے. سر ود یور پرمیشن سر, یہ جو ابھی دوبارہ رپورٹ دی ہے, اس میں ایز منی ایز 23 یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہو رہا ہے. 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law. There is an index, sir. There is a summary.
And it is on the record, sir. सर ये जो फरमा रहे हैं पैरा 3 मैं पढ़ देता हूँ. Again. As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination papers is still marred by the incident of fear, intimidation, snatching of nomination papers and other CS such acts in the hands of the police. In this way the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any discrimination December 2023 and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite assistance as required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and directions instructions of ECP2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officials of any department who is intervening and impeding the nomination process, creating hurdles for the candidates in receiving and filing of their nomination papers. Your personal attention, intervention and your timely response in the matter to control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% है कि जी प्रपोजर सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आया. अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं. Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता personal बात करना, but nevertheless this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? But this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये कि obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया जी. आपके ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, provincial election commissioner. Sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to. लेटर किधर है जो लिखा आपने? सर लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं ये तो 12 तो ये तो प्रोविंशियल डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना. तो इसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है. तो 24 का लेटर 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया. 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है. 29 को नहीं जाने दिया. 30 को तशद्दुद किया. वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है. ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद. सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है. इलेक्शन कमीशन पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? सर ये समरी जो लिखी है ये 24 इस पे है सर. 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, ये ऊपर लगाया है. इसमें कंप्लायंस पूछ रहे हैं. चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं? 24 दिसंबर के लेटर के जवाब आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है. ये दो को लिखा है ना आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई,
نہ وہاں سے چیف سیکرٹری نے ایڈمنسٹریٹو مشینری کو کوئی ہدایت دی. دونوں نے ود امپیونٹی اٹھا کے تو جو ہے سارے اندر کر دیا. کیونکہ اس لیٹر کی کاپی تو آپ کو بھی آئی ہے نا سیکرٹری, انہوں نے مارک کی ہے نا انکلوجر کے طور پہ, آپ کو بھی مارک کی ہے نا سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہم سر ریکارڈ سے دیکھ لیں گے, لیکن اس میں نامینیشن پیپرز ور اسموتھلی دین فائل, اور اس کا ریکارڈ ہے, ہم نے بھی ان کو بھجوائے ہیں سر. یہ سمری اگر آپ دیکھ لیں 26 کو بھجوائے ہیں, 27 کو بھجوائے ہیں, 28 کو بھجوائے ہیں. ایون مطلب لاسٹ when as and when their complaints were received, there is a summary and there is a report that action has been taken, sir. Your allegation is against whom? Sir? Ji? Sorry sir, Your allegation is against whom? my allegation is that the election commission Is against whom? respondent number 2, respondent Give number the 4, name. respondent number 7. Give 2, the name. 4 and 7. Give the name. Who are these? Yes. 2 is Umar Hamid Khan. Sir, Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab, and Umar 7 Hamid is Khan to is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. Very many letters. Sir, but He is supporting you. okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff. Not even personally the IG or the Chief Secretary. That's it. Okay. Just okay. So you only have problems with Punjab. نہیں سر, باقی چیف ابھی تک سیکرٹری جو آپ نے خط بتایا ہے وہ تو آپ دیکھیے ایویڈنس پنجاب کی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایویڈنس میرے پاس پنجاب کی ہے, پھر آپ باقیوں کی میرے پاس اور ایویڈنس. باقی الیکشن کمیشن کی جہاں تک نان کمپلائنس ہے وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ خود خط لکھ رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے, ہمیں ٹائم تک بلایا ہے, 3 بجے ہماری ہیئرنگ بھی کی ہے, انہوں نے خطوط بھی جاری کر دیے, کمپلائنس بھی کر دی. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ٹھیک ہے نا, اب رہ گیا آپ کا یہ پنجاب کا, بیکاز ڈیورنگ کورس آف یور آرگیومنٹ یو اونلی پوائنٹڈ آؤٹ اونلی دس لیٹر پیج 12, وہ آپ نے ریپیٹڈلی بتایا کہ پنجاب میں یہ ہوا ہے. تو اب پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل ہے جی کوئی موجود اس وقت؟ سر میرا صرف سبمیشن یہ ہے, مائی لارڈ دی چیف جسٹس از رائٹ, میرا سبمیشن یہ ہے کہ یہ صرف ریچول سے آپ ایک لیٹر لکھ دینے سے کام نہیں بنے گا. یو ہیو ڈائریکٹڈ دی الیکشن کمیشن ٹو انشور آل دس ہیپنس ڈزنٹ ہیپن واٹ از ہیپننگ ان پنجاب. یہ اب آئی جی کو اگر فری ہینڈ مل جاتا ہے, چیف سیکرٹری اگر ڈیفائنس کرتا ہے, دیر آر پروویژنز ان دی لا اٹسیلف ویئر بائی دی آئی جی اینڈ دی چیف سیکرٹری کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. دے شوڈ بی رادر ٹیکن ٹو ٹاسک بیکاز the entire edifice of the state depends on that. بھی نہیں ہے. Did you move an application before the ECP to do so? Yes, sir. اس میں میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں سر, میں اس دن آرگومنٹس ہمیں آنریبل سپریم کورٹ نے بھیجا تھا. Move an application to the Election Commission of Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab. وہ تو پروونشل الیکشن کمشنر نے لکھا ہے, مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو خود لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر. They have not reverted. آپ سے سوال پوچھنا جواب ہی نہیں دیتے ہیں, کیا کریں ہم؟ تھرڈ ٹائم میں سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں لکھا, ہم نے نہیں لکھا. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن خود لے رہا ہے, پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے کہ دے فلڈنگ کمپلین. دیکھیں جب یہ 12 تاریخ کا خط آپ کو بھی آیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو پنجاب کی طرف سے, تو اس کے کمپلائنس آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, آپ اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو کہ چیف سیکرٹری کو خط لکھا, آئی جی کو لکھا, وہ اپنے طور پہ ٹیک اپ کرتے کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے. میٹنگز ہوئی, آپ کا اپنا آفیسر لکھ کے دے رہا ہے نا, پروونشل الیکشن کمیشن آپ کو خط لکھ رہا ہے, کاپی آپ کو مارک کر رہا ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیتے. تو وہ سپریم کورٹ کا جو اوریجنل آرڈر ہے ہمارا جس کی کنٹمپٹ میں یہ آئے ہیں, اس میں یہی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے ود امپیونٹی اٹھایا ہے اور فری تھا سر, کوئی کنٹرول نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے سر آرگومنٹس میں اس دن جو 23 کو جناب نے بھیجا تھا,
नॉट असिस्टेंस, क्या आप क्या बोलना चाहते हैं जनाब? जी सर, स्पेशल सेक्रेटरी। सर ऐसे है कि पंजाब से आए हैं? ये सर पंजाब से आए हैं? नहीं, स्पेशल सेक्रेटरी। सर हमने ये इंश्योर किया है उस दिन जब ये लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की इलेक्शन कमीशन में। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन एक खत आपको लिख रहा है, कॉपी आपको मार कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी को उसने एड्रेस किया है, आईजी को किया है, तो उसके बारे में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है आप। सर हमने इंश्योर किया है कि तमाम नॉमिनेशन पेपर इंश्योर करने के अलावा आपने कुछ, ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का स्पेशल सेक्रेटरी है, तो आपको देखना चाहिए कि जब आपका अपना ऑफिस ही इंटरनल आपकी वो है ना, वो तो सर उसके बाद स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स दी, वहाँ पुलिस ही पुलिस थी सर। इसमें लिखें Learned Counsel for the petitioner. नहीं, ये 47 तो खत्म हो गई है। अच्छा, ये है 47 नहीं है सर, ये ओरिजिनल 40 है। ये इसमें वी आर हियरिंग 40। इसमें लिखिए क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन नंबर 40 of 2023। Constitution petition number 47/2023 was disposed of by order dated, इसमें लिख दीजिए learned counsel for the petitioner submits, was disposed of by order dated 22nd December 2023. And it is alleged that the order has not been complied with. In this regard, reference is made to a letter dated 24 December 2023 of the Provincial Election Commissioner of Punjab, addressed to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Punjab, Government of Punjab. Full stop. Chief Secretary Punjab. The Election Commission of Pakistan, the representative of the Election Commission of Pakistan. Next paragraph लिख दें. The representative of the Election Commission of Pakistan state that they are doing everything to ensure free and fair elections in the country, and have submitted compliance report dated 26 December 2002 and have submitted a comprehensive compliance report, capital C, capital R, dated 26 December 2023 in this court, comprising of 161 pages, stating that requisite instructions have been issued. Full stop. We inquired from learned counsel as to state the precise allegations that the petitioner has, and were told, and learned counsel referred to the letter of the Provincial Election Commissioner of Punjab, and stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the instructions of the instructions कहेंगे इसको, disregarded the क्या कहेंगे इसको, instructions कहेंगे, the directions of the Provincial Election Commissioner Punjab. So under the circumstances,
that notice be issued, that in the first instance notice be issued to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, and Advocate General Punjab to submit क्या कहेंगे concise statement, to submit reply, to submit report as to submit report with regard to whether the directions of the said directions have been complied with, and if not, why the same have not been complied with. ठीक है सर, एक और चीज अर्ज थी कि एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की. एमपीओ का इससे क्या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? When we are faced, we have the benefit of senior counsel. ठीक है. Now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया, तो वो कैसे कर दिया. हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 27 को दरखास्त दी. आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली हैं. अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो लेट्स नॉट जस्ट मेक जनरल एलिगेशन. जहां आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं. अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गया और बलूचिस्तान में, आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है. तो जहां तक जेन्युइन बात है हम करेंगे, मगर एक ये ना कहें कि दुनिया आपके खिलाफ हो गई है. डोंट बी हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड, हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. 1960 का एमपीओ जी, आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं ना कि आज तक पाकिस्तान लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट्स होती है आप खत्म नहीं करते हो, आप रिपीट कर दें उसको. Do you know under the conditions that the elections were fought when Ziaulak was there? You should know better. I know. You know. Yes. खत्म कर दिया करें. अब जब भी you know the elections when Mohammad Khan Junejo became prime minister. Do you remember those? वो तो so they were क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाई इलेक्शंस. तो don't just say that the worst election. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए. वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे. हाँ, अच्छा. इस कोर्ट के इलेक्शंस करवाए. Anything else or you happy? अगर जब आप सवाल पूछा करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे. ब्रेक तो कल नहीं नेक्स्ट इसमें कब रखें? कल के लिए रख लें, परसों के लिए. वो रिपोर्ट कल हमारा वो लार्जर बेंच है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. मंडे को कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने वो गजाली साहब बेचारे पास्ट हुए, सो वी होल्डिंग अ फुल कोर्ट ऑन दैट. मंडे इज ऑलराइट, बिकॉज उनको वक्त कल रखेंगे, वो टाइम ही ले लेंगे, फिर यही होगा. ठीक है, मंडे को कर दें. ठीक है सर. 8 जनवरी. ठीक है. आर यू अवेलेबल? आई विल बी अवेलेबल. ठीक है, 8 से ही मैं आ जाऊंगा. कोई बात नहीं, सुबह देख लेंगे यार, 2 मिनट का काम है. चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. अच्छा, हम अब कौन सा केस है अगला? बस खाली हुई बट्टू में. अच्छा, मिसिंग पर्सन का केस है. Let us refresh ourselves. 5 minutes. We'll come back in 5 minutes. ठीक है. किस उसमें आप हैं ना? और कौन? आपको तो हमने सुन लिया था ना. आपने अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस फरमाया था. अब आमना जंजुआ साहिबा हैं. ठीक है जी, मैंने कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा जजमेंट से आपको रेफर कर दी है. सजेशंस जो आपने मांगी थी, मैं ऐसे फुल सब्जेक्ट करूंगा. आप अटॉर्नी जनरल रेफर करें, आप सजेशंस दीजिए. जी ठीक है. जजमेंट्स क्या, हमें इसमें क्या जजमेंट की जरूरत है? क्योंकि इस पे
सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कहा गया कि आप दिखाएं कि इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायती दरख्वास्तें आपने जमा करवाई हैं। आपकी पूरी पटिशन पढ़ ली है, आपने एक भी वाज़ेह इल्ज़ाम नहीं लगाया। आप अपनी दरख्वास्त पढ़ लें, क्या वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त में आती है? आपने जर्नल बातें की हैं, हम भी इत्तफाक करते हैं इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। जबकि वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया, मैं सीडी लेकर आया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं कि हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिया जा रहा। सारे पाकिस्तान ने देखा है कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। हमारे रहनुमाओं को रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में रोका जाए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। जी इकरामुल्लाह जोया, आगाह कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आज की जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस मियां मोहम्मद अली मदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुकाम से इस्तफसार किया गया कि क्या आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, जिस पर डीजी ला ने कहा कि इनकी हर शिकायत को हमने मुतलका अथॉरिटी को भेजा है जहां कानून के मुताबिक इस पर फैसला हुआ है। और लतीफ खोसा की जानिब से कहा गया कि तारीख के बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है और आरओ दफ्तर के बाहर से लोगों को उठा लिया जाता है। इस मामले पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। लतीफ खोसा ने मौके पर किया कि मेरे अपने बेटे को गिरफ्तार किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बुनियादी इल्जाम किस पर है, सिर्फ पंजाब का मसला है और क्या पंजाब का एडवोकेट जनरल मौजूद है? चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, दौरान सवाल, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने आईजी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए लिखा, जबकि लतीफ खोसा ने कहा कि हमने इन्हें इनके अपने सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर अमल नहीं हो रहा। और जस्टिस मियां मोहम्मद अली मदर ने रिमार्क दिए कि आपका अपना सूबाई इलेक्शन कमीशन लिख रहा है, इस पर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और इस हवाले से जो है अदालत ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब से जवाब तलब कर लिया, जबकि अदालत ने आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भी जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। मजीद यहाँ पर यह भी कहिएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से आज जो समाअत हुई इसमें लतीफ खोसा की जाने से भी ये कहा गया कि मैं हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इंतखाबात से मुतल्लिक हुक्म दे रखा है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमें अपनी वो शिकायत दिखा दें जो इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से आज की इस समाअत के दौरान जो है वो रिमार्क सामने आए कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता। और इस हवाले से मीडिया की बात पर भी चीफ जस्टिस ने जो है वो रिमार्क दिए, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट 26 को जमा कराई। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद कुछ क्या हुआ तो बताएं। और इस हवाले से वकील लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि आप वीडियो लगाने की इजाजत दें, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो पीटीआई के साथ हुआ। और इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैंने नहीं देखा और क्योंकि मैं मीडिया नहीं देखता हूं। और जबकि दूसरी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क आए कि आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं, ये कानून की अदालत है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी दरखास्त में तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने का इल्जाम आईजी पर लगा रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात आईजी, चीफ सेक्रेटरी या सुप्रीम कोर्ट ने कराने हैं। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि हर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, वहां जाएं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि बारहा कह चुके हैं कि अदालती जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी है। और वकील लतीफ खोसा ने मौके पर किया कि आप मुझे भी सुन लें, मैंने 55 साल से वकालत। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सिल अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा कराई है, जबकि वकील लतीफ खोसा ने कहा इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त देते हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम क्या रोज आपको केस सुनते रहेंगे, अदालत कोई और काम भी करना चाहती है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि अखाड़ा नहीं है, ये अदालत है। और इस हवाले से लतीफ खोसा ने कहा कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत भी तो देखें, जबकि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद रिपोर्ट 26 को जमा कराई। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद कुछ क्या हुआ। और इस हवाले से आज की जो समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आरओ के फैसले की कापी
कापी नहीं मिलती तो कापी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरखास्त दें, और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम कैसे दूसरे फ्री को सुने बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें, और हम कैसे कह दें कि फलां पार्टी के कागजात मंजूर करें और फलां के मुस्तरद आप बताएं हम क्या ऑर्डर पास करें। ये चीफ जस्टिस की जानिब से लतीफ खोसा से सवाल पूछा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ट्रिब्यूनल में अपील दायर करें, इसके बाद हमारे पास आए तो सुन लेंगे। तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए इकरामुल्लाह जोया आपका बहुत शुक्रिया।